Okay, very good afternoon to everyone. I hope my voice is audible. Let me know that first. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Let me share the screen. One second. Let me make this as full screen. Okay. So today we'll be just looking at the syllabus part and how many assignments are there and what are the requirements of the course that would be looking, and a little bit of the chapter number 1 that we'll be seeing it out. Okay. I would be teaching you the GE2 as same as GE1. It's a continuation course, that is GE2 you have. Let me quickly go to the prerequisite. देखो GE2 के लिए it's very important that at least you should know some basic things of GE1. Like you should know what is void ratio, should at least know classification of soil. Little bit of knowledge is required of GE1. Okay. Now quickly moving to the syllabus part. I'm audible, right? Because I'm in college. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो आपके G2 के अंदर भी सेम है जैसे G1 में था. 20-20 मार्क के 2 टेस्ट होंगे, दैट इज IA1 एंड IA2. यू वुड बी हैविंग दैट, और इन दोनों का एवरेज निकाल के आपका लास्ट 80 मार्क्स का पेपर है. एज यू हैव इन G1 द सेम यू हैव इन G2. so 80 marks you would be having paper, and it would be of 3 hours duration. That all things are there. Now what is left is, let me erase this up. One second. इसके अंदर लैब भी है, तो लैब के अंदर आप इस बार लैब के अंदर यू विल बी हैविंग टर्म वर्क. जैसे G1 में था सेम ही, तो 25 मार्क का टर्म वर्क है और 25 मार्क का ओरल भी है. So in G2 also you're having oral of this. Now let me quickly show you what are the requirements of the course. Experiments का you're having 15 marks for experiments. Experiment write up का 15 मार्क है. Assignments का 5 मार्क है. Attendance का 5 मार्क है. Attendance आपको पता है above 95%, above 90%, I don't know the limit. अगर आपको उतना मिलता है तो 5 मार्क मिलता है अटेंडेंस के लिए. असाइनमेंट्स जैसे अपने G1 में थे सेम G2 में रहेंगे. यू वुड बी हैविंग 6 असाइनमेंट्स फॉर G2. ठीक है, नॉट मोर देन दैट, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन G2 सिलेबस. इट इज रिटन इन द सिलेबस दैट 15 सम्स होने चाहिए. ठीक है, सो you can see this 6 assignments are there. I have to fit 15 sums in that. So it might be there like you might be having कि एक assignment में 4 sum तक जाए. ठीक है, थोड़े बड़े बड़े असाइनमेंट्स हो सकते इसके अंदर. तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो असाइनमेंट्स जो है उसके कुछ असाइनमेंट्स जो है हम क्लासरूम में ही सॉल्व करेंगे, कुछ आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं. सो इट वुड बी डन. लैब वर्क, एक्सपेरिमेंट राइट अप, जो भी प्रिंट आउट आप मारते हो और उसमें रीडिंग डालते हो, सेम चीज इसके अंदर भी. सो दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्स. सिलेबस की ओर चलते हैं जल्दी फटाफट. Not going into much into detail. The first chapter, देखो G1 और G2 में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ. Your G1 में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सॉइल के बारे में पढ़ा. That is formation of soil, properties of soil we have seen. Then indices we have seen, liquid index. Then you had plastic index. That all indexes we have seen. इसके बाद हमने permeability के बारे में पढ़ा. We have seen the permeability of soil. We have seen compaction of soil, and we have seen the effective stress. Right? इतना चीजें हमने पढ़ा. Indices like G1 में module number 1, module number 2 और module number 3 तक we say it to be clubbed as properties of soil हमने पढ़ा. जबकि permeability, compaction, effective stress, these are called as engineering properties of soil. These are called as engineering properties of soil. In continuation, we have some more engineering properties of soil. Like we have consolidation. Then we have shear strength. This too we have. Also we have lateral pressure.
ये सब क्या है थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप आज देखेंगे. इन डिटेल वी विल बी सीइंग जैसे मॉड्यूल स्टार्ट होगा. नाउ मॉड्यूल नंबर 1 पे यू आर हैविंग कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल. लेट मी रीड दिस अप, डोंट नीड दिस आल्सो. ठीक है. Now total hours duration is 6 hours. It is given in the module. We will be seeing what is consolidation. बोर नहीं मरवा रहा हूँ, सिलेबस रीड करके. We will be seeing what is the consolidation और इसके कुछ फॉर्मूलाज हम देखने वाले. हाउ टू कैलकुलेट द कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल और लैब के अंदर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखने वाले. सो 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. दैट इज कंसोलिडेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंड लैब पे हम उसको डिटरमाइन कैसे करें. And it is of 6 hours. One is more focusing on the hours because अगर आपको chapter wise weightage चाहिए, just multiply this hours into 2. That is moreover इस chapter का 12 marks का weightage. Right? Let me go to the next one. It's this one. Then you have shear strength of the soil. Shear strength में भी see तो हम पढ़ेंगे कि what do you mean by shear strength? ठीक है. Then how to calculate shear strength, that we are going to see. How to calculate shear strength and how to determine shear strength in the lab. That is, this is chapter number 1 है, वैसे chapter number 2 है. In every chapter what we are going to see is what is mean by consolidation, what is mean by shear strength, then how to calculate it or what are the derivations that we have. In the last we are going to see the lab work. मतलब लैब के अंदर मैं shear strength को कैसे डिटरमाइन करूं या फिर लैब के अंदर मैं कंसोलिडेशन को कैसे डिटरमाइन करूं. Now let me go to the next one. Now from chapter number 3 it's very interesting. You're going to see what is how to determine stability of slope. मतलब क्या, एक सेकंड. अगर आपके पास एक स्लोप है तो स्लोप स्टेबल है कि अनस्टेबल है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये हम डिटरमाइन करने वाले हैं. एंड देयर आर सम मेथड्स टू डिटरमाइन इट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है. नेक्स्ट वन, लेट मी गो टू द क्विकली टू द नेक्स्ट वन चैप्टर. नेक्स्ट वन इज lateral pressure. Now what do you mean by lateral pressure is if I am having a retaining wall, let me draw it out. मेरे पास एक retaining wall है. ओके. तो रिटेनिंग वॉल के यहाँ पे सॉइल हो सकता है. रिटेनिंग वॉल मतलब अगर मुझे इस सॉइल को रिटेन करना है या फिर सपोर्ट करना है तो मैं एक रिटेनिंग वॉल यहाँ पे डालता हूँ. ऑलराइट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज ये जो रिटेनिंग वॉल, ये जो सॉइल जो है, दिस सॉइल इज कॉल्ड एज बैकफिल सॉइल. पीछे है ना रिटेनिंग वॉल का, सो दिस सॉइल इज कॉल्ड एज बैकफिल सॉइल. ये जो सॉइल जो है कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा इस रिटेनिंग वॉल के ऊपर. तो प्रेशर कितना होता है, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन लैटरल प्रेशर थियरीज. The same thing, what do you mean by lateral pressure, how to calculate it, that all things we are going to see. Go with the next one. Next one is shallow foundation. Now आपने अभी तक तो आपको पता रहेगा कि बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन होता है. There could be two types of foundation. One could be shallow foundation. आपने बीडीडी पे ऐसे कुछ बनाया रहेगा, फुटिंग जो आप बताते हो, दैट इज अ शैलो फाउंडेशन टाइप. ऑलराइट. तो इसका साइज कैसे हम डिटरमाइन करें, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द मॉड्यूल नंबर 5, दैट इज शैलो फाउंडेशन. हाउ टू डिटरमाइन द साइज, व्हाट थिंग्स इट डिपेंड्स अपॉन, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन द चैप्टर नंबर 4. एंड द लास्ट चैप्टर pile foundation. Like if the load is too large, like if you're having some bridge or something else, then you don't go for shallow foundation, you go for pile foundation. You give piles. Piles मतलब ना एक छोटा सा ऐसे लंबा सा एक चीज हम नीचे डाल देते हैं. जब तक एक हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता तब तक हम उसको नीचे करके सपोर्ट के लिए डाल देते हैं. So same thing we are going to study in the module number 6, that is what you mean by pile foundation, how to determine the size of this and the loads and other things out, that we are going to study in the module number 6. Let me quickly go to the course objective. Don't worry, in detail we are going to study as the chapter starts. Now marks distribution मैंने आपको बता दिया. जितने भी number of hours है इसको multiply by 2 करो, you will get the marks distribution. ठीक है, because
If you see the syllabus also, you're having 39 hours. ठीक है, 39 hours को मैं एक राउंड ऑफ करके 40 hours तक रखता हूँ, तो 40 hours into 2 मतलब 80. So this converts into marks. So अगर आपको चैप्टर वाइज वेटेज चाहिए, जस्ट आपकी जितने भी नंबर ऑफ आवर्स है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, you will get your marks distribution of your things. Now let me quickly move to the course objective. Like course objective and course outcome, कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद as a student what you should know, at least you should be able to do. The first things is you should be able to calculate. Yeah. Once again, let me give it time. Yeah. So after completing this course, at least you should be able to do this much things. That is the objective of this course, or that is the outcome of this course. Now, पहला चीज ये है कि आपको कंसोलिडेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है? After completing this course, you should be able to calculate the consolidation of the soil. At least laboratory भी आपको आना चाहिए. Now, second module में से you should be able to determine the shear strength parameter of the soil. And meanwhile, let me discuss a little bit of shear strength. The shear strength parameter of the soil is very important. This is the one of the most important chapter that you will be having in the whole module. Next one. After the third module, you should be able to calculate your slope is stable or it is an unstable. तो ये निकालने के लिए ना we have a word which is called as factor of safety करके एक word है. In the fourth module, you should be able to calculate your lateral pressure for various type of soil condition. तो वो आपको निकालना आना चाहिए. And for the fifth module, you should be able to calculate size of your shallow foundation या फिर bearing capacity निकालना आना चाहिए. And the last module, you should be able to determine the pile capacity या फिर pile का settlement आपको निकालना आना चाहिए. Why it is important? क्योंकि हर मॉड्यूल के बाद आपको खुद से पूछना है कि ये सब आपको आता है कि नहीं आता है. If you are not able to do this, the syllabus is not satisfied or you have not done your work completely. Okay. Now let me quickly move to the other part. Now, as G1 we had, my lectures, how it is. So is there anything to change from G1 to G2? Let me know that. To change करना है, वैसे कुछ है? I'm audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ method change करना है? Anything? नहीं sir. Okay. No, sir. The same Excel sheet, it would be there. Now it is not prepared till now. It would be prepared by this week. Then all the recordings as well, the notes would be uploaded in GCR, as you already know. So assignments, I have told there would be 6 assignments, but in syllabus it is written that 15 sums has to be there totally. Like 6 assignment में मुझे 15 sums डालने हैं, तो that's a requirement. तो वो तो डालने पड़ेंगे, ठीक है? वो थोड़ा कम नहीं कर सकते, बट असाइनमेंट 6 ही है, उसके आगे नहीं या फिर पीछे भी नहीं जाएगा. So there won't be like theory questions in the assignments because I have to reduce that, to make it small. Okay. And lab work, I don't know. Again, coming to college, you would be having the lab work in the college. या फिर ऑनलाइन रहेगा तो वर्चुअल लैब है. नाउ एज इन G1 एंड G2 बोथ, जैसे G1 था वैसी G2 है. इट इज आल्सो कंसेप्शनल, ठीक है? इसमें भी सम ज्यादा आता है. देन देयर आर कपल ऑफ डेरिवेशंस व्हिच आर देयर, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देन थियरी इसमें भी कम है. एज यू हैव G1 एंड G2, द सेम लॉजिक अप्लाइज. जैसे G1 पढ़ा वैसे G2 आपको पढ़ना है. अनदर थिंग अबाउट टेक्स्ट बुक, अगर आपने रेफरेंस बुक खरीदा हुआ है, बेचो मत, उसको रद्दी में भी मत डालो. अगर आपने पुन्मिया लिया है या फिर अरोरा लिया है, बोथ आर यूजफुल फॉर G2 एंड नो नीड टू रेफर बोथ द टेक्स्ट बुक. एनीवन एज पर योर टेस्ट यू कैन रेफर. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया,
Aurora, it is more inclined towards theory part, while Punmia, if you are more interested to do numericals, you can refer Punmia. And meanwhile, if you are more interested to give competitive exam, I will tell you to refer Punmia, क्योंकि उसमें गेट के सम्स है, IES के सम्स है, तो वो बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है आपके लिए. And that's regarding that part. Now let me quickly move to the module number 1. थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम रोक देंगे लेक्चर को. One second. And give me time here also. Okay. In G1, why I'm taking today, why I'm introducing this module number 1 today is little bit of G1 is required here. The name of the module is consolidation, as you already know. G1 में हमने एक चीज पढ़ा था, that is module number 6 में हमने एक चीज पढ़ा था, which is called as compaction. Can anyone tell me the definition of compaction? Because these two things are related, not completely, but थोड़ा बहुत related. Compaction क्या होता है? फिर मैं बता सकता कि what is the difference between compaction and consolidation. इसलिए कुछ भी कॉम्पैक्शन में सर एयर निकालते हैं कंप्रेस करके. कंसोलिडेशन में वाटर जो होता है वो कितने टाइम के बाद निकल जाएगा पानी, मतलब जमीन के नीचे से. वेरी गुड. बट कॉम्पैक्शन का फिर भी डेफिनेशन थोड़ा आधा अधूरा. अगर आपने कॉम्पैक्शन ध्यान से पढ़ा, तो हम कॉम्पैक्शन में क्या करते हैं? वी हैव अ सॉइल, उसमें से वी गिव सम लोडिंग्स, ड्रॉ समथिंग, ठीक है, और हम बोलते हैं कि इस जब ये लोडिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है वो लोडिंग, इसके बाद सॉइल कॉम्पैक्ट होता है. बट सवाल ये है कि सॉइल कॉम्पैक्ट कैसे होता है? एनीवन, कुछ तो बाहर जाता रहेगा ना सॉइल में से, तो सॉइल कॉम्पैक्ट होगा. वेरी गुड. एयर void फील हो जाता वर्ड्स बाहर. हाँ, तो एक्सपल्शन, अगर एक्सपल्शन ऑफ एयर हो रहा तो उसको हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं, ठीक है. सेम चीज होता है जब एयर एक्सपेल होगा तो वॉइड्स कम हो जाएंगे, वॉइड्स कम हो जाएंगे तो आपका सॉइल का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है. दैट इज योर कॉम्पैक्शन. बट कंसोलिडेशन में कुछ अलग चीज होता है, एंड इट नॉर्मली स्टार्ट्स आफ्टर कॉम्पैक्शन. नॉर्मली इट्स नॉट कंपल्सरी, इट नॉर्मली स्टार्ट्स आफ्टर कॉम्पैक्शन. तो इसमें क्या होता है, इफ यू आर गिविंग अगेन लोडिंग, अगर आप लोडिंग दे रहे हो या फिर कुछ और रीजन की वजह से अगर आपका वाटर एक्सपेल हो रहा है, अगर आपका वाटर एक्सपेल हो रहा है, देन वी कॉल दिस प्रोसेस एज कंसोलिडेशन. नाउ दिस वर्डिंग दैट आई हैव यूज्ड कि वाटर एक्सपेल हो रहा है, दिस नॉट अ टेक्निकल वर्डिंग, ठीक है. द टेक्निकल वर्डिंग में नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करूंगा इन डिटेल व्हाट इज नोन एज कंसोलिडेशन वाला. तो कुछ अजम्पशन है जो हम रखते हैं कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन पे. द फर्स्ट अजम्पशन इज, ये जो कंसोलिडेशन जो है, ये जो कंसोलिडेशन जो है, ये तभी होगा जब आपका कोई भी मटेरियल लूज है, जब आपका कोई भी मटेरियल लूज है. ये आपको याद रखना. अब व्हाट यू मीन बाय मटेरियल लूज है? अगर आपके सॉइल मास के अंदर, अगर आपके सॉइल मास के अंदर वॉइड्स है तो कंसोलिडेशन होगा. वॉइड्स में आपको पता है, वॉइड्स में दो चीजें होता है. if I draw a soil as a three-phase system, let me draw it. This is the soil as three-phase system. You have solids, you have pani, and you have air, right? You have soil, water, and air. This is a three-phase system that we used to draw. Just a minute. Okay. Now in this three-phase system, this one is called as voids. And I've told you, for soil to be compacted or soil to be consolidated, you need this voids. Next assumption is, these are the assumptions that we are taking. Okay. Next assumption is, your
water is incompressible. Water is incompressible. Matlab, water as it is, it won't be able to compress. Now, third assumption is your soil is compressible. Why the soil is compressible? Because अगर voids कम हो जाएंगे तो आपका soil compress हो जाएगा. Due to voids, the soil is compressible. And the last one for consolidation is this: the degree of saturation is equal to 1. We assume it to be equal to 1 for consolidation process. Now, in detail, we will be discussing it, next lecture. Consolidation में बहुत सारे process है. One is called as primary consolidation, second is called as secondary consolidation. In detail, we will be moving in the next lecture. Okay. Also, okay, we will start in the next lecture. तो मैंने आपको जैसे बताया कंसोलिडेशन की जो चैप्टर है, नॉर्मली दिस इज द वे दैट वी आर गोइंग टू सी इन द चैप्टर नंबर 1. पहले तो हम पढ़ेंगे कि कंसोलिडेशन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी. देन वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन. प्रोसेस कैसे होता है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है. दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. देन आफ्टर दैट, in a meanwhile we will be seeing कि formulas क्या क्या है to calculate consolidation. What are the formulas that we have to calculate consolidation? And then we will be seeing what are the lab methods that we can have to calculate consolidation. What are lab methods that we can have to calculate consolidation? So this would be, the peculiar flow chart of the process. Okay. Anything else? Syllabus I've told, assignments, labs is there, oral is there, that all things we have done. कुछ है जो डिस्कस करना है आपको? It's a first lecture, not ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा. Nothing. Okay. And let me start with the attendance part. One second. Any difficulty that you have got in G1 while studying G1? I'm asking because that we can remove in G2 then. कुछ हुआ जैसे जब आप पढ़ रहे थे तब डिफिकल्टी कुछ हुआ आपको? Again, I'm telling G1 and G2. जैसे आपने G1 पढ़ा वैसे ही आपको G2 पढ़ना. Sums are very important. Do as much sums you can. Okay, it's a conceptual, subject. It's not like you can rectify and you can pass it out. You have, if you understand the concept, it's very easy. It's very easy than G1 also. Okay, थोड़ा तकलीफ आपको आएगा for chapter number 1 to understand it, because consolidation as such you have not seen. So थोड़ा तकलीफ आ सकता है. Because why I'm warning this, because there are many terms that you will have in consolidation chapter, like a time factor, a degree of consolidation, that all things. तो थोड़ा derivations आएंगे, but as such देखेंगे कि उसको कितना simplify हो सके. We will be seeing that. From chapter number 2, it's very interesting. You will be having shear strength, then stability of slope. It's one of the best chapter, क्योंकि अगर आप, I hope बहुत लोग ने mini project भी लिया उसके ऊपर, slope stability के ऊपर, तो वो वहाँ पे काम आ जाता है. What are types of methods that we can use? Shallow foundation, it's one of the fundamental chapter, as well as pile foundation is one of the fundamental chapter. Fundamental chapter मतलब जब आप आगे की सब्जेक्ट्स पढ़ोगे वो आपकी यूज में आएंगे. जैसे शैलो फाउंडेशन यू हैव इन DDRCS में भी वहाँ पे यूज है. पाइल फाउंडेशन आल्सो देयर इज अ यूज इन सम ऑफ some other मतलब सब्जेक्ट्स. ठीक है, लेट मी टेक दैट इन स्पॉट. रोल नंबर 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. 10. 11. Present, sir.
Any other doubt you have? Anyone? No? अच्छा ठीक. 11 is present. I think. Rule number 11 is present. No. 12. 13. Present, sir. 13. 14. Present, sir. 15. Present, sir. 16. 16. 17. Present, sir. 18. 19. Present, sir. 20. Present, sir. 21. Present, sir. Okay. From 21 to 25, who is present? Sir, 21. 21 done or Sir, 25. 25 done, 23. 23 done or कोई है? 25, sir, 25. 25. 21, 23, Sir, 25. 30. Okay. 26 to 30, who is present? Sir, 30. 27. 30 सुनाई दिया और 28 सुनाई दिया और हाँ और 27. Sir, 29. 7 done, 29 done. Anyone else? 29, 27, 28, 30. Anyone else? No. 42, sir. Yeah. 42. Coming to that. 31 to Sir, 40. 26. 26 done. 31 to 40. 32. 32. Who is present? 35. 33. 35 is 31. present. 33 is present. 31 is present. 38 is 35, present. sir. 36 is present. 35 is present. Anyone else? 39. 34. 39 present. 34 present. Anyone else? 33. 33 done. I'm reading the call. 31 is present. 32 is present. 33 is present. 34 is present. 35 is present. 36 is present. 30. Yeah. 36, 38, and 39 is present. Anyone else? Okay. Sir, 35. Okay, 35 is also present. Okay, anyone else? No, no. Sir,